अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। आंसर इज homologous structures in plants are organs or parts that have a common ancestral origin and share a similar developmental pathway but may have different functions or appearances। कह रहा बच्चों homologous structures वो parts या organs हैं plant के जिनका common ancestral origin होता है but different functions या appearances हो सकते हैं। ठीक है, despite their differences they exhibit similarities in structure indicating a shared evolutionary history। यानी डिफरेंसेस के बावजूद उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं इनके स्ट्रक्चर में जो इंडिकेट करती हैं उनकी शेयर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स इंक्लूड leaves and cotyledons. Both are flat photosynthetic organs, but leaves are found on stem, while cotyledons are embryonic leaves in seed, sepals and petals. Both are floral organs, but sepals protect the flower bud, while petals attract pollinators. Stamens and pistils. Both are reproductive organs, but stamens produce pollen, while pistils contain ovary. Wings of samaras and leaves. Samara's winged seeds have wing-like structure similar to leaves, indicating a shared origin. Thorns and leaves. Some plants have thorns that are modified leaves, showing a common ancestry. Homologous structures demonstrate the shared evolutionary history among plant species and highlight the adaptability of plants to their environment. Next question is, why the theory of evolution was attributed to Darwin? Answer is, the theory of evolution was attributed to Charles Darwin for several reasons. First one is comprehensive explanation. Darwin's book on the origin of species 1859 provided a thorough and well-supported explanation of evolution, including the mechanism of natural selection. Evidence from various fields. Darwin drew evidence from biology, paleontology, geology, and comparative anatomy to support his theory. Concept of natural selection. Darwin introduced the concept of natural selection, which explained how species adapt and evolve over time. Clear and concise writing. Darwin's writing was accessible to a broad audience, making the complex idea of evolution understandable. Influence on scientific community. Darwin's work sparked debate and discussion among scientists, leading to widespread acceptance of evolution. Foundation for modern biology. Darwin's theory laid the groundwork for modern biology, influencing fields like genetics, ecology, and evolutionary biology, while others like Alfred Russel Wallace and Jean-Baptiste Lamarck also contributed to evolutionary theory. Darwin's comprehensive and well-supported work earned him the primary attribution. कह रहे बच्चों जो बाकी हमारे पास साइंटिस्ट थे लाइक एल्फ्रेड रोजल एंड लमार्क, उन्होंने भी एवोल्यूशनरी थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो डार्विन का कंप्रिहेंसिव और वेल सपोर्टेड जो वर्क था उस earned him the primary attribution. Next question is, what is meant by descent with modification? Descent with modification is a phrase coined by Charles Darwin to describe process of evolution. It means that descent, all living organisms share a common ancestor and have evolved from a single lineage. Modification, over time species undergo changes in their characteristics, traits and morphology.
resulting in new species or varieties. In other words, as species evolve, they retain some characteristics from ancestor descent, develop new traits, or modify existing ones. Modification. This process occurs through various mechanisms such as natural selection, genetic drift, mutation, gene flow. Descent with modification summarizes the core idea of evolution. Species change and diversify over time while retaining a connection to their ancestral lineage. Next question is question number 4. The diagram shows two varieties of moss in England, A and B. मेरा जो डायग्राम है उसमें दो वैरायटी शो हो रही है मोस की. ए जो है वो लाइट कलर्ड वैरायटी है, जो बी वाली है वो डार्क कलर्ड वैरायटी है. क्वेश्चन पूछ रहा है ए विच वैरायटी वाज मोर कॉमन व्हेन देयर वाज मोर एयर पोल्यूशन गिव रीजन वेल. कह रहा है बच्चों इन दोनों में से कौन सी वैरायटी ज्यादा पाई जा रही थी जब एयर पोल्यूशन ज्यादा थी, और उसकी रीजन बताएं. और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास विच वैरायटी इज मोर कॉमन इन इंग्लैंड नाउडेज, कि आजकल कौन सी वैरायटी ज्यादा पाई जाती है. ठीक है, उसकी रीजन बताएं. आंसर इज, पहले ये पार्ट का हम आंसर देखते हैं. द डार्कर वैरायटी ऑफ मोथ वाज मोर कॉमन व्हेन देयर वाज मोर एयर पोल्यूशन. यार बच्चों जो डार्कर वैरायटी है जो बी वाली वो ज्यादा पाई जाती थी जब ज्यादा एयर पोल्यूशन थी. रीजन क्या है? द डार्कर कलरेशन हेल्प द मोथ ब्लेंड इन विद डार्क ट्री ट्रंक्स दैट वर डिसकलर्ड बाय पोल्यूशन प्रोवाइडिंग कैमोफ्लेज फ्रॉम प्रेडेटर्स. यार बच्चों जो डार्क कलर्ड वाले मोथ थे वो मिक्स हो जाती थी जो डार्क ट्री ट्रंक्स थे उनमें, जिनका कलर डार्क किस वजह से होता है? ड्यू टू पोल्यूशन. ठीक है, पोल्यूशन की वजह से जो ट्री ट्रंक्स थे ना वो डार्क हो गए थे. इसकी वजह से जो डार्क वैरायटीज थी वो ज्यादा इजीली उनमें ब्लेंड या मिक्स हो सकती थी और प्रीडेटर से बच सकती थी, इसलिए उस टाइम पे जो डार्क वैरायटी थी वो ज्यादा थी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव कैमोफ्लेज. अब जो हमारे पास बी पार्ट था, द लाइटर वैरायटी ऑफ मोथ्स इज मोर कॉमन इन इंग्लैंड नाउअडेज. कह रहा है जो लाइटर वैरायटी है वो आजकल ज्यादा कॉमन है इंग्लैंड में. उसकी रीजन क्या है? With the reduction in air pollution, tree trunks are no longer discolored and lighter coloration new provides better camouflage for moss as it matches the lichen covered tree trunks. कह रहा बच्चों जब एयर पोल्यूशन रिड्यूस हुई तो जो ट्री ट्रंक्स थे वो उनका कलर जो था वो डार्क खत्म होना शुरू हो गया. ठीक है, अब क्या हुआ कि उनके ऊपर जो पहले लाइकन्स वगैरह जो ग्रो नहीं कर रही थी, अब वो लाइकन्स वगैरह दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो गए. तो अब जो लाइट कलर मोथ थे उनका ज्यादा इजी था उसमें क्या करना, अपने आप को हाइड करना लाइकन्स के ऊपर. ठीक है, लाइकन कवर ट्री ट्रंक के ऊपर. सो जो लाइट कलर्ड वैरायटी थी वो अब ज्यादा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. नोट, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पीपल्ड moth experiment which demonstrated adaptation to environmental changes due to pollution. Next question is, describe briefly evolution, homologous organs, speciation, natural selection, artificial selection, industrial melanism, paleontology, comparative anatomy, vestigial organs, selective breeding. वैसे तो जितनी भी टर्म्स है बच्चों जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो डिफरेंट टॉपिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं. तो अभी इसको कह रहे हैं सभी टर्म्स को डिफाइन करें, तो हम वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन. द साइंटिफिकली सपोर्टेड थ्योरी that all species of life have developed from a common ancestor through a process of variation, mutation, genetic drift, and natural selection. Next is homologous organs. Organs that have a common ancestral origin but may have different function or structures. For example, human arm and bird wing. क्या है बच्चों? वो ऑर्गन्स जिनका एक कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन आर्म है और जो बर्ड के विंग्स है ये क्या है? ये होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, यानी इनका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन है वो सेम है, कॉमन है, जबकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है. नेक्स्ट है स्पेशिएशन. द प्रोसेस बाय व्हिच अ न्यू स्पीशीज इमर्ज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन और अदर मैकेनिज्म. क्या है वो प्रोसेस जिससे में एक न्यू स्पीशी मर्ज होती है, बनती है एक एग्जिस्टिंग स्पीशी से, किस वजह से? जियोग्राफिकल आइसोलेशन या अदर रीजन की वजह से. इसको हम स्पीशिएशन कहते हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. द प्रोसेस
by which individuals with favorable traits are more likely to survive and reproduce, passing those traits to their offspring. ठीक है, नेचुरली क्या होता है बच्चों के वो प्रोसेस जिसमें वो इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल ट्रेड्स हैं सर्वाइव करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या करते हैं, नेचुरली सेलेक्ट होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी ट्रेड्स को अपने आप में पास ऑन करते हैं. इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन, द इंटेंशनल सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स फॉर ब्रीडिंग. यानी कि जो हम इंटेंशनली जो ह्यूमन सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को डिजायर्ड ट्रेड्स फॉर ब्रीडिंग, उनको हम क्या कहते हैं, इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. फॉर एग्जांपल डॉग ब्रीडिंग. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, the adaptation of dark-colored moths to industrial pollution, making them less visible on dark tree trunks. नेक्स्ट इज पैलियोंटोलॉजी. ये बच्चों हम जब हमने स्टार्ट की चैप्टर में पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें हमने एक पढ़ी थी पैलियोंटोलॉजी भी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसमें हमने एनाटॉमी भी पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी. जो मॉर्फोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. अब कंपैरेटिव एनाटॉमी है तो मतलब ये है कि हम दो ऑर्गेनिजम्स की जो एनाटॉमी है उसको कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. The study of structural similarities and differences among living organisms. Next is vestigial organs. Organs which have lost their original function but remain present. ऐसे organs बच्चों कह रहे हैं कि जिनका function lost हो गया, कि वो कोई function perform नहीं करते लेकिन present है. For example, human appendix. Next is selective breeding. The intentional breeding of individuals with desired traits, often used in agriculture and animal husbandry. कि जो हम इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाते हैं इंडिविजुअल्स की विद डिजायर्ड ट्रेट्स के जो हमें ट्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन occurs in nature without human intervention. Environmental pressures. Individuals with favorable traits are more likely to survive and reproduce due to environmental factors, for example climate, predators, competition. Random variation. Genetic variation occurs randomly and selection acts on existing traits. Slow process. Occurs over many generations. Acts on population. Selection acts on the entire population, leading to adaptation and evolution. Next is artificial selection. Human intervention. Selective breeding by humans for desired traits. Directed selection. Breeders choose individuals with specific traits to reproduce. Intentional variation. Humans introduce genetic variation through selective breeding. Faster process. Can occur in a few generations. Acts on individual. Selection acts on specific individuals with desired traits, leading to rapid changes in the population. In summary, natural selection is a slow, environmental-driven process, while artificial selection is a faster, human-directed process. Both lead to adaptation and evolution, but in different contexts. So students, हमारे ये short questions complete हो चुके हैं. Hopefully आपको समझ आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.